Has it started? Yeah, fine. Good. तो अभी तक हमने मेजरली दो आपके टाइप के ऑटोमेशन हमने पढ़े, जो था एक प्रोसेस बिल्डर था और एक था हमारा वर्कफ्लो। राइट नाउ these in both of these we already saw that as per even current use case functionality wise over the time ये अपग्रेड हो रहे हैं। वर्कफ्लो रूल से जाके फीचर्स थे, एक रूडिमेंटरी बेसिक फीचर स्ट्रक्चर हो गया। अब उसके बाद जाके हमारे पास क्या फायदा आया कि बोला कि थोड़ा और अपडेट करते हैं, थोड़ा स्ट्रक्चरली इजी बनाते हैं यूज, प्रोसेस बिल्डर आया। अब राइट नाउ what they have done is after process builder they came up with a new type of automation which is called the flow। तो ये भी आपका प्रोसेस ऑटोमेशन के अंदर ही आपको मिलेगा, सिमिलर टू वर्कफ्लो एंड दिस। नाउ विथ फ्लो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको पहले ही सोचनी पड़ेगी, राइट? कि आपको कौन कौन से सिनेरियो में आपका फ्लो यूज हो सकता है, बिकॉज फ्लो के ऑटोमेशन के लिए what it has done is multiple types of trigger points है आपके पास, कि इन सिनेरियोज में फ्लो आप चला सकते हो, कहाँ कहाँ से फ्लो चला सकते हो उसके भी आपके पास ऑप्शंस हैं। तो ये ओवरऑल समरी हमको बेसिकली करना पड़ेगा। सो फर्स्ट थिंग वी विल रियलाइज इज व्हाट इज अ फ्लो। एक सैंपल में एक फ्लो, जो रेडीमेड जो फ्लोज रहते हैं उनमें से कोई एक फ्लो ले लेता हूँ एकदम। लेट्स टेक समथिंग very basic one just to get familiar with the UI first. So let this open. Right, right. So is this visible to you right now? Yes. Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. So so where does it get its name? As it is, you know, easily visible. Flow chart जो प्रोसेस वो प्रोसेस बिल्डर से करना चाह रहे थे, उसके ऊपर हमारा एक इम्प्रूवमेंट है फ्लो का। नाउ विथ फ्लो दिस इज हाउ मोस्टली आपका जो एंड रिजल्ट दिखेगा, जब आपने कोई फ्लो बना लिया है उसके बाद जो दिखेगा, तो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव। जहाँ पे कोई एक इनिशियल पॉइंट होगा, राइट, जहाँ से वो शुरू होगा। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनिशियल पॉइंट, अलग अलग चीज से आप कर सकते हो। हियर यू विल सी दैट द स्टार्ट इज अ स्क्रीन फ्लो। नाउ व्हाट इज अ स्क्रीन फ्लो वी विल गो व्हेन वी आर क्रिएटिंग अ न्यू वन। सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दिस पार्ट इज योर स्टार्ट ऑफ द फ्लो, कि यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। नाउ बेस्ड ऑन ईच नोड यहाँ पे अलग अलग टाइप के आपके पास टूल्स रहते हैं विद इन द फ्लो। This one is a screen type flow. Then these pink ones have a different purpose. These yellow ones have a different purpose. And इनके अंदर अलग अलग जो हमारे पास categories हैं वो भी हमको देखना है. But ultimately when you see a flow, this is what you are trying to create. Now let's do one thing. I'll go from just the core basics first and we'll go step by step into what everything is. So for that we will create a new flow. Right? So when working with a flow, right, the base thing is there is something called flow templates जो हम use कर सकते हैं. So flow templates we will see later. For now we want to know the fundamentals of the flow. So we will start from the scratch. जब आप start from scratch करते हो तो आपको जो जो configuration है हर चीज flow का आपको खुद से करना पड़ेगा. टेम्पलेट में आपको कुछ चीजें रेडीमेड मिल जाती है. So let's go with scratch for now. Now this is the फर्स्ट क्वेश्चन यू शुड बी आस्किंग जब आप फ्लो के साथ काम कर रहे हो, कि मेरा फ्लो कैसे चलेगा, कब चलेगा, राइट? एंड एज आई टोल्ड यू देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शन, राइट? सो वी विल गो थ्रू ऑल ऑफ दीज वन बाय वन. सो दिस इज जस्ट द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वंस, लेकिन हम ये नीचे से सारे एक एक करके हम जाएंगे. सो द फर्स्ट वन इज एन ऑटो लॉन्च्ड फ्लो, नो ट्रिगर.
अब ऑटो लॉन्च्ड फ्लो का मतलब क्या है यहाँ पे? What does this trigger word specifically mean? This trigger word specifically means some kind of DML operation has happened, right? Some kind of database update, create, delete, any kind of DML operation has happened on which we want this to run. So that would mean this flow is dependent on a trigger, right? कि अगर suppose नया opportunity बना तो मेरा flow चलना चाहिए. Right. So that would mean it is triggered by what? The DML operation of opportunity create. Auto launch flow without any trigger का मतलब है आपने एक flow बना दिया जिसका इनिशियल आपने कोई ट्रिगर पॉइंट दिया नहीं, किसी ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड के ऊपर डिपेंडेंसी है, तो ये बनाने का फिर हमारा पर्पस क्या रहेगा? ये उन ऑटोमेशंस के लिए होगा जो हमको बेस्ड ऑन आवर कस्टम रिक्वायरमेंट्स समटाइम्स कॉल करनी होती है. कहाँ से कॉल करेंगे? जब हम कोई शेड्यूल्ड जॉब बैचेस लिखते हैं वहां से चलेगा, राइट? मे बी हमारा कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होगा एपेक्स कोड के अंदर, फिर उसके बेसिस पे ये मेथड हमारा कॉल होगा. तो दैट वुड बी योर फ्लो जिसका कोई ट्रिगर नहीं है, एन ऑटो लॉन्च फ्लो विदाउट एनी ट्रिगर. खाली आप एपेक्स से कॉल कर दो, वो ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाना चाहिए, राइट? नाउ ऑटो लॉन्च्ड ऑर्केस्ट्रेशन, नो ट्रिगर. Now this orchestration and auto launch flow, these are mostly similar. It is just about how it works with other ones. Like auto launch flow is something, suppose I'll keep this example as open. In this one, what you have is, say I have 6-7 operations मेरे पास है, लेकिन जो भी operations है flow के अंदर हो गए. So that would be, I would want this one. Now in auto launch orchestration, what if I have multiple operations? राइट, जो मतलब अलग अलग फ्लोज में सेपरेटेड है. इन दैट केस इट वुड बी बेटर टू यूज दिस वन. ओके, दिस ऑर्केस्ट्रेशन मींस इट ऑर्केस्ट्रेट्स द एग्जीक्यूशन, राइट? मोस्टली सिमिलर, जस्ट अ फ्यू बेसिक डिफरेंस. यहाँ पे सारे ऑपरेशंस इसी फ्लो के अंदर हो जाएंगे, यहाँ से आप दूसरे फ्लोज को भी कॉल वगैरह अगर आपको करना है, सो दिस इज द वन विच इज बेटर. नाउ कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट फ्लो. कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट फ्लो के अंदर आपका क्या करता है, ये यूआई पे आपको कोई फॉर्म बना के देना है. जस्ट एक डिफॉल्ट एक इनपुट का फ्रेम, 4 फील्ड्स इनपुट कर, उस टाइप का आपको फॉर्म बना के देना है, तो आप ये यूज कर सकते हो. एक्चुअली आई वांट टू नो योर आउटलुक. सो आउट ऑफ दीज वंस, राइट, as you see, these are the ones which are, the reason they are recommended is which that these are the ones which are most commonly used, mostly used, right? This one, right, auto launch orchestration, like I have not seen an implementation. Contact request flow, I have not seen. Evaluation flow orchestration, these are very rarely used flows. Now, do you want to go through all of these, or do you want to go through the ones which are actually used? Which one would be less confusing for you guys? सर जो फ्रीक्वेंटली यूज होता है वही उसी के ऊपर देखेंगे. Yeah, because the reason is as soon as I started explaining contact request flow, I realized आपको 4-5 साल में एक भी दिखेगा तो it's miracle. बट Okay. सर जो बाकी भी है, अगर आप वन लाइन में उसका मतलब डेफिनेशन अगर बता सकते हो, फ्रीक्वेंटली यूज है वो तो आप एक्सप्लेन करोगे ही, बट बाकी सबका एक एक लाइन में कुछ भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो तो दैट विल बी गुड. हाँ, that I can do. That is not an issue. या, So थैंक that यू. is anyway not an issue. Right. So contact request flow का मैंने आपको बताया. Now this evaluation flow का क्या वो होता है? Evaluation flow में normally it is tailor made for one specific scenario. What if आपके पास कोई एक सिचुएशन है जहाँ पे लेट्स से यू वांट टू नो मैं इस अपॉर्चुनिटी को क्लोज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, राइट? यू वांट अ यस एंड नो एज एन आंसर. एंड सो व्हाट इज दैट? बेसिकली कोई एक कंडीशन है जो बेस्ड ऑन सम ऑपरेशंस आपको चाहिए. तो इन दैट केस यू विल डू एन इवैल्यूएशन फ्लो. इवैल्यूएशन फ्लो के अंदर आप क्या कर सकते हो, ये आउटपुट खाली देता है आपको एक बुलियन में, राइट? वो बुलियन में आपको वैल्यू देगा, ट्रू देगा या फॉल्स देगा, कंडीशन आपका मीट हुआ कि नहीं.
उसके बेसिस पे सपोज आपको अपॉर्चुनिटी क्लोज करने के लिए आपको चेक करना है पेरेंट अकाउंट पे इतना अमाउंट है कि नहीं, राइट, कोई और चाइल्ड अकाउंट तो नहीं है, 3 कॉन्टैक्ट है कि नहीं, मे बी मल्टीपल कंडीशंस है. So within this flow, you will be evaluating all those custom criterias, and then based on that, you will be returning if the condition is met, true or false. Based on that, it will evaluate to the next step. Now workflows के लिए जो है CMS जो है, so this CMS is mostly a licensed part of Salesforce. This is not something which you get as part of the default or sales or service cloud. Contract management जो रहता है इनका, वो contract management के लिए जो orchestration flows बनते हैं वो इसके part होते हैं. So mostly in this case, normally क्या होता है in actual projects, there is something called aptus, then there is something called conga, जिनके मैनेज पैकेजेस रहते हैं सेल्सफोर्स के अंदर. सो मोस्ट प्रोजेक्ट्स में क्या रहेगा, सेल्सफोर्स का कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सूट दे डोंट यूज बिकॉज इट इज मोर एक्सपेंसिव, सो दे गो विद अ कस्टम बिल्ट वन. कॉन्गा हो गया, एप्टस हो गया, उनकी जो क्लासेस वगैरह सब कुछ वो लोग इंपोर्ट कर लेते हैं. सो दिस वन इज एक्चुअली फॉर द सेल्सफोर्स वन, सो एज आई मेंशन्ड रेयरली यूज. नाउ दिस इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट लिंकिंग फ्लो, ये भी आपका जस्ट रेडीमेड फ्लो है. इसके अंदर आप खाली ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ रिकॉर्ड्स को लिंक कर सकते हो. लाइक आपने एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, फ्लो सिलेक्ट किया, राइट, दूसरा ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड सर्च मारा, फिर उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को लिंक कर देगा, राइट. प्लेटफॉर्म इवेंट वन, दिस वी विल बी स्टार्टिंग इन डिटेल, सो आई विल स्किप फॉर नाउ, राइट. Recommendation strategy, this one I would say is मोर रेयरर देन ऑल द अदर्स, बिकॉज ये क्या करता है, ये आपका यूजर्स जो भी होते हैं, लेट्स गो टू एनी ऑफ दीज, so you will see that with any of the records, right, हम लोग related list के अंदर what we can do is we can do tasks, right. tasks आपके रह सकते हैं कि आपको जो करना है, right, notes रह सकते हैं, नया task calls ऐसे रह सकते हैं. Now what will happen is based on जो deadline है, जो timeline है, उन सब के according this actually kind of user को personal recommendations दे सकता है जो आप चाहते हो, right, कि इस object की ये records recommendation में दो, right, those kind of things you can do with this. Now record triggered flow, this is the most important one. Okay, this is something you will see every day, like mostly you will see this. So this one we will be creating this one only right now first. So these record triggers, let's keep. Schedule trigger flow is something which is more used for automations. Automations as in what? Bulk automation. जहां पे suppose आपको चाहिए कि हर रात को कोई एक फील्ड को फिर से कैलकुलेट करके अपडेट करे, right? So in that case, what you can do is you can build that whole automation inside the flow, right? And then you can set a time कि कब ये चलना चाहिए. तो आप वैसा फ्लो भी आप बना सकते हो. सो रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो का अप्रोच इज मोर लाइक, अच्छा अभी मैंने क्रिएट किया, अब इसको मॉडिफाई करो, या अपडेट हो तो मॉडिफाई करो. शेड्यूल ट्रिगर्ड इज समथिंग जब आपको पता है कि मेरे 10,000 रिकॉर्ड्स को अपडेट करना है, सो आई वोंट कीप डूइंग इट ऑन रिकॉर्ड ट्रिगर्ड, उससे टाइम कंज्यूमिंग होगा. इंस्टेड हर दिन रात को 12 बजे से एक बार चलेगा और सारे रिकॉर्ड्स को एक साथ कर देगा. नाउ screen flow, screen flow is basically, I'll give you an example. Okay, I think for screen flow, it is better that we create one, right? We will create a screen flow also. So screen flow के अंदर आप क्या कर सकते हो? With workflow and process builder, हमने जो जो modifications किए थे, जो जो automations हम कर रहे थे, right? All of these were in the back end. आप UI से क्या देख सकते हो कि कब फील्ड हुआ, या आप UI पे कुछ चेंज कर सकते हो इन वर्कफ्लो रूल प्रोसेस बिल्डर? यूआई के लिए फ्लो यूज करेंगे ना सर, राइट. तो जब आप सपोज आपने ऑपरेशन किया, हाँ, बैकएंड में फील्ड अपडेट हो गया, फिर पेज रिफ्रेश करने पे आप देख सकते हो. तो दिस इज मोर ऑफ योर बैकएंड ऑटोमेशन. व्हाट इफ यू वांट कि मेरा कोई काइंड ऑफ यूजर स्क्रीन बनाओ या जर्नी बनाओ कि मेरे को यूआई पे कुछ दिखाना है, मे बी जस्ट कोई डिटेल दिखाना है, मे बी कुछ इनपुट लेना है, कोई फॉर्म बनाना है, इवन कस्टम में चाहूँ कि किसी के क्लिक पे कुछ कस्टम कंपोनेंट बना है वो दिखा दो. So if you want to display something on the screen and उसको आप automate करना चाहते हो, in that case you get screen flow. Okay, so screen flow का purpose ये है. So we will do one thing today. Actually, we'll create a record triggered flow and we will do a screen flow also.
User provisioning flow is something which is sometimes used by admins based on preference. जहाँ पे आप यूजर के अकाउंट्स वगैरह डिटेल्स जब बनाने होते हैं तो वो बनाने के लिए दिस इज मोर टेलर्ड कि यूजर बनाओ, कौन कौन से परमिशन देने हैं, लाइसेंस देना है, ऐप का एक्सेस देना है, वो सब चीजें यू कैन कॉन्फ़िगर ऑन दिस. सो दिस वुड बी योर काइंड ऑफ more niche kind of flow, not that much used. So the biggest one that we need to focus out of these ones are record triggered flow, screen flow, and I'll give you a more detail of actually the schedule triggered flow and platform event also. Right. So for now, let's go with the record triggered flow. Right. So as soon as I click on creation of a record triggered flow, right, so in this case just make sure मैं जैसे जैसे एक एक नोड खत्म करूंगा नेक्स्ट नोड पे जाऊंगा. So if you have any questions regarding that node, please ask then only. Okay. So Sir, yes. I have one question. If interviewer ask for the types of flow, then how we can explain about it? Means it is categorized as a screen flow and auto launch flow. Under auto launch flow, we can explain it about the record trigger flow, record trigger schedule flow. So how we can explain? Yeah, so आपका यहाँ पे आंसर का अप्रोच वुड बी मोर रिगार्डिंग जो हमारा ओवरऑल जो स्ट्रक्चर रहता है. ओवरऑल स्ट्रक्चर यू विल बी सेइंग दैट विद रिस्पेक्ट टू flow is an automation tool within Salesforce. Out of that we have basically two main types. If we want a UI based automation, then we have the option of going with screen flow. If we go with just a backend operation we want to perform, then we have a lot of different variety based on how we will trigger it. Okay. So first category is UI level chahiye, so you get screen flow. If you want a backend automation, then the decision becomes how you want it to be triggered. If it is to be on a record, right? If it has to be on a platform triggered, if it is something that we want to run automatically on a schedule, based on that we have a variety. And no interviewer is asking you to list all 11 types here. Okay, no one is asking you to just, you will have to then as an example give the most common ones are screen flow, record triggered flow, schedule flow, platform event, and that's fine. Okay, sir. Getting. Okay, आप ओवरऑल वो बताइए ब्रॉड कैटेगरीज में पहले डिवाइड कीजिए. फिर पहला कैटेगरी है यूआई लेवल ऑटोमेशन चाहिए तो स्क्रीन फ्लो, दैट पार्ट इज फिक्स्ड. बैकएंड लेवल ऑटोमेशन चाहिए तब हमारे पास वैरायटी आती है कि किस तरह से चलाना है उसके बेसिस पे वैरायटी है. सो दैट इज द ओनली ऑप्शन यू हैव टू एलाबोरेट. Okay, sir. Right. Understood. So for now, what we want is let's make an automation जहाँ पे what are the stages for this negotiation? Okay, let's take closed one only. Right. What I want is जब भी मेरा opportunity closed one होगा, मेरा ये delivery installation status should become in progress. Okay, that is say the structure I want. Or let's even avoid this. Let's make it a bit more complex. Let's go to our account. Right. Which of this is a text? Account site is a text. Fine. So what I want is जब भी मेरा opportunity closed one हो तो मेरा account पे जो ये account site field है, for normally it should be a different field but just I need a text field. मैं चाहता हूँ कि ये account site field पे जो opportunity closed one हुई है उसका नाम populate हो जाए. Is the scenario clear? Sir, can you explain once again? Yes. Yeah, let's take an example. So we want an example of an automation जो हमको करना है. So what we are doing, this one is a record triggered flow, right? So in a record triggered flow, मैं चाहता हूँ opportunity के update पे मेरा record चले, right? मेरा flow चले actually.
and if my opportunities become closed one, let me do one thing, let me put it back to negotiation review, right? हाँ, so what I want is अगर मेरा ये opportunity होता है closed one, so in that case what should happen, जो account का record है यहाँ पे एक field है वो populate हो जानी चाहिए और यहाँ पे मैं डालूंगा ये जो मेरा opportunity है opportunity का नाम. Okay, so I have a condition and I have an operation for the automation. Is this clear? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. But sir, so may I know that so your screen is displaying very late. So whatever you just talking that. So may I know that so this problem is from my side or network issue? Don't know. This could be some network issue because I face some issue in loading this, but with the other screens it is going fine. So I'll proceed a bit slowly then, no issues. Okay, right. Okay, sir. Okay. So yeah, just the operation case आप समझ लीजिए. ये मेरा opportunity का record है. This Burlington Textile Wing Plant Generator. जब भी मैं इसको closed mark करूंगा, what I want is इस opportunity का जो नाम है ये यहाँ से कॉपी होके इसी का जो पेरेंट अकाउंट है उस अकाउंट की स्पेसिफिक फील्ड में पुट हो जाना चाहिए. नाउ सिंस दिस इज अ रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो, सो द बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आई हैव टू डू कि कौन से ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड पे ये चलना चाहिए. सो इन आवर केस इट विल बी द अपॉर्चुनिटी रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट एंड इट कैन बी एनी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, कस्टम ऑब्जेक्ट जिसका वो आपने बनाया है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट कंडीशन इज कब ट्रिगर होगा, जब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहा है, जब रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है, या बोथ क्रिएटेड अपडेट पे भी होना चाहिए या फिर डिलीट पे होना चाहिए. नाउ लॉजिकली अभी तक मैंने जो बताया उसके अकॉर्डिंग अगर मेरा अपॉर्चुनिटी क्लोज्ड वन हो रहा है तो होना चाहिए. दैट मीन्स मेरा अपॉर्चुनिटी अपडेट हो रहा है. बट ये लास्ट टाइम ओनली आई हैड गिवन यू एन एग्जांपल. व्हाट इफ मैं एक क्लोज्ड वन अपॉर्चुनिटी ही क्रिएट करता हूं, राइट? सो इन दैट केस वो पॉपुलेट नहीं होगा. सो द बेटर ऑप्शन वुड बी a record is created or updated. Right. So I'll hold off for now. Any questions?